हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैं फ्रिज के सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैं आपके साथ फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ। बिफोर आई गो फॉर ग्रोसरी शॉपिंग आई ऑलवेज गिव अ क्विक क्लीन टू माय फ्रिज। तो लेट्स स्टार्ट फ्रिज क्लीनिंग। ग्रोसरी रिस्टॉक करने से पहले आई डू अ क्विक क्लीनिंग। फिर जस्ट वैक्यूमिंग कर लेती हूँ और फिर वेट वाइप से वाइप इट डाउन। दैट्स इट। आई नेवर हैव टू डू डीप क्लीनिंग एक्चुअली। I didn't take out this because they still have eggs in them. This extra self riser gives me extra storage space. I store my pre-workout also in fridge because I don't take pre-workout regularly. मैं pre-workout कभी कभार लेती हूँ, so I have to store it in fridge, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। Whatever leftover was there, I'll start keeping back. बेसन भी बहुत कम यूज होता है घर में, तो आई कीप इट इन फ्रिज। These are the homemade spices like कढ़ाई चिकन, चिकन चट्टीनाड। मैं जब भी बनाती हूँ एकदम 3 टाइम का चिकन बना सकूँ मैं वैसे बना लेती हूँ, इसलिए the leftovers are kept here.
रियूजेबल टिश्यूज में एक में धनिया पत्ता और एक में करी पत्ता रखा है. करी पत्ता स्टेज सो गुड लाइक दिस वे. नॉर्मल टिश्यू पेपर्स में वो खराब हो जाते हैं, बट दिस रियूजेबल टिश्यू पेपर्स और इवन कॉटन क्लॉथ बहुत अच्छा काम करता है. And tomatoes, I keep it in these boxes. Nothing fancy, store bought, those organizers. Garlic, I keep it in glass jars. अंदर ना मैं वो सिलिका जो बैग्स आते हैं मैं इसके साथ रख देती हूँ. हेल्प्स टू कीप इट ड्राई एंड फ्रेश फॉर लॉन्गर. खराब नहीं होते. So fridge is ready to be restocked. Nice, clean and ready to be restocked. देख सकते हैं वेजिटेबल बास्केट्स में ओनली 1 कैप्सिकम ही कैप्सिकम और टमेटोज है. सो आई नीड टू गो डू वेजिटेबल ग्रोसरी. मैंने आपके साथ फ्रिज क्लीनिंग शेयर की. डीप फ्रीजर मैंने एक्चुअली 2-3 दिन पहले क्लीन कर ली थी, सो आई डोंट नीड टू क्लीन इट अगेन. पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ. व्हाट डू आई कीप इन माय डीप फ्रीजर अदर देन आइसक्रीम और नॉन-वेज आइटम्स. मेनली डीप फ्रीजर डोर मैं यूज करती हूँ. रेडीमेड दिस पैकेट्स मसालाज आते हैं फॉर दोज, कि वी आर अ फैमिली ऑफ 3. एक बार पैकेट ओपन होता है इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू फिनिश. सो आई कीप इट हियर. इट स्टेज वेरी फ्रेश फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मेनली चिकन गोज हियर. आपने देखा है कि हाउ आई स्लाइस अनियन एंड आई फ्रीज इट. सो इट्स केप्ट क्वाइट क्लीन एंड nicely organized. So I don't want to do anything with the deep freezer side. तो आपने देखा मैं अपना वीकेंड कैसे स्टार्ट करती हूँ. फ्रिज क्लीन कर लिया है so that as I get my fruits and veggies straight away I can put it in the fridge. तो please do let me know in the comment आप अपना वीकेंड कैसे स्टार्ट करते हो. So please do subscribe, like and comment.